अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोज राइटर्स ऑफ अर्ली विक्टोरियन पीरियड। अच्छा, ये टॉपिक थोड़ा ड्राई सा है। आई होप आप लोगों को समझ आए। ठीक है जी। सो द फर्स्ट पॉइंट विच वी हैव इज़ दैट प्रोज राइटर्स ऑफ द पीरियड इज़ क्वाइट लार्ज। मतलब इस एरा में जो प्रोज राइटर्स की तादाद थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, and there is great variety of style among them than to be found in any other period। मतलब हर एक राइटर का अपना स्टाइल था लिखने का। ठीक है जी। और वो आपको और किसी भी एरा में देखने को नहीं मिलती। So there was an absence of any well-defined tradition of prose writing, and that's why each writer cherishes his own style। जिस तरह हमने पहले बात की कि इसमें जो प्रोज राइटर्स थे इस एरा में, हर एक का अपना स्टाइल था, तो इस वजह से जो एक वेल डिफाइंड ट्रेडिशन था प्रोज राइटिंग का, तो वो एब्सेंट था इस एरा में। एंड दैट इज़ वाई ईच राइटर चॉइसेस हिज ओन वे एंड adopted his way of writing। The next point we have is that some of the great prose writers of the early Victorian period were Carlyle, Ruskin, Macaulay, and Matthew Arnold। And Carlyle is the best example of romantic prose writing। ठीक है जी। The next point we have is that it's about Thomas Carlyle। We will study him in detail। Thomas Carlyle lived from 1795 to 1881. So he was the dominant figure of the early Victorian period prose writers, okay? And he made his influence felt in every department of Victorian life। एवरी डिपार्टमेंट मतलब लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, म्यूज़िक हो गया, ठीक है जी, पॉलिटिक्स इवन। ओके ओके। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज़ दैट इन जनरल प्रोज लिटरेचर ऑफ हिज एज। इन जनरल जो हम अगर बात करें तो उसकी एरा की जो प्रोज था, उनकी जनरल व्यू क्या थी? ही वॉज इनकम्पैरेबली द ग्रेटेस्ट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉरल फोर्सेस। ही वॉज द ग्रेटेस्ट prose writers and greatest moral forces of his age। in what regard? In regard to general prose writing in spheres of religion, society and politics, he sought reality and criticized all sham। sham मैंने आपको बताया था कि फेक इसको कहते हैं, ठीक है जी। सो ही किन स्फेयर्स में या किन दायरों में उसने रियलिटी को चुना और फॉल्सहुड को क्रिटिसाइज़ किया। वो स्फेयर्स थे या वो दायरे जिसको कार्लाइल ने क्रिटिसाइज़ किया, वो थे स्फेयर ऑफ रिलीजन, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। ओके। एंड बेसिकली कार्लाइल जो था वो एक प्योरिटन था। अब आप कहेंगे कि अब रह तो रहे ये रहा है विक्टोरियन एरा में, तो कैसे प्योरिटन हो गया? प्योरिटन वो अपने राइटिंग के ज़रिए था, ठीक है जी। प्योरिटन वो किस लिहाज से था? अपनी राइटिंग के हवाले से था। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज़ दैट टू हिम हिस्ट्री वॉज अ रिवलेशन ऑफ गॉड्स राइटिस डीलिंग्स विद मैन। अच्छा जी। कार्लाइल के लिए जो हिस्ट्री थी वो क्या थी? कि वो ये गॉड की रेवोल्यूशन थी, एक अच्छे राइटिस सीधे रास्ते पे चलाने की। किसकी? मैन की, लोगों की सीधे राह पे चलाने की। ये एक वही थी हिस्ट्री। क्या थी? एक वही थी अल्लाह की तरफ से लोगों को सीधा रास्ते पे चलाने की। और he had no faith in democracy। and why was that so? because in that the French Revolution happened and many writers were influenced from it and many writers took inspiration from it in order to write। okay, some of his amazing works include French Revolution, then his lectures are on hero and hero worship, then he wrote Past and Present, then he wrote Letters and Speeches of Oliver Cromwell in 1845। Oliver Cromwell was, by the way, the PM of the country at that time,
and then the history of Frederick the Great, and then life of John Sterling. It was in, I guess, in 1851. Okay. Then the next writer which we have is John Ruskin, who lived from 1819 to 1900, and he expressed himself voluminously. Voluminously का मतलब होता है in detail. So he expressed himself in more detail as compared to the other writers of his age. He became interested in art and wrote modern painters. ठीक है, जिस तरह हमने कार्लाइल की बात की कि उसने मुख्तलिफ स्फेयर्स में अपना नाम मनवाया था, मतलब रिलीजन में, पॉलिटिक्स में, आर्ट, आर्किटेक्चर में. तो रस्किन जो था, he became interested in art and wrote modern painters in from 1843 to 1860, and it was wrote in how many volumes? It was wrote in 5 volumes, so as to justify the position of Turner as a great artist. He wrote these modern painters to justify the the position of Turner as a great artist, and it was published in 5 volumes, and it was written from 1843 to 60. The next point we have is that being a man of deeply religious and pious nature. किसकी बात हो रही है? जॉन रस्किन की बात हो रही थी कि वो एक डीपली रिलीजियस एंड पाइस मतलब नेक, ठीक है, वो जिस तरह के वो एक डीपली रिलीजियस एंड पाइस नेचर का बंदा था, ही कुड नॉट सेपरेट ब्यूटी फ्रॉम रिलीजन. किस चीज़ को किससे वो सेपरेट या अलग नहीं कर सकता था? ब्यूटी को रिलीजन से अलहदा नहीं कर सकता था. देन इन हिज 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर 1849 and the Stones of Venice 1851 to 53, he tried to prove that the best type of architecture can be produced only in those ages which are morally superior. जिस तरह हमने इसके पहले सेंटेंस में बात की कि he was a man of deeply religious and pious nature, so that's why he says that in his writings in the 7 lamps of architecture and the Stones of Venice, he says that the best type of architecture तब पैदा होता है जब वो एजेस मॉरली तौर पर क्या हो, सुपीरियर हो, अखलाकी तौर पर जो एजेस सुपीरियर होते हैं, तभी वो उनमें बेहतरीन किस्म का आर्किटेक्चर पैदा होता है. Then the next point we have is that in his economic essays he tried to reduce the evils of competitive systems. उसने मुख्तलिफ किस्म के economic essays लिखे थे. किसने? जॉन रस्किन ने. and in which he tried to remove or reduce the evils of competitive system to bring the employed and employees together in mutual trust. जो mutual trust होना चाहिए employee और employed में, उनको करीब लाया वो. and helpfulness, ठीक है जी, और उनकी हेल्पफुलनेस में भी मदद की. कैसे मदद की? वो जब एक प्लेटफॉर्म पे आए तो अपने कंसर्न्स शेयर किए, अपने इनसिक्योरिटीज शेयर किए एक दूसरे के हवाले से. दैट्स हाउ ही हेल्प द एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयज़. and he tried to seek beauty, truth and goodness, and according to him these were some of the chief ends of life. मतलब क्या अमेजिंग से गोल्स थे किसके? लाइफ के, ज़िंदगी के जो अजीम मकासद थे, चीफ एंड्स थे लाइफ के, वो क्या थे? हेल्पफुलनेस, टू सीक ब्यूटी, ट्रूथ एंड गुडनेस. The last point we have is that he was the prophet in an age of rank materialism. वो अपने जो एज था, अपना एरा का प्रॉफिट कहलाता है. क्यों? किस वजह से? रैंक मटेरियलिज्म. व्हाट इज़ रैंक मटेरियलिज्म? दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से काफ़ी चेंजेस आए थे. वन वाज दिस दैट इट वाज रैंक मटेरियलिज्म. देन अदर वन वाज यूटिलिटेरियनिज्म. यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं वादियत को, अफादियत, ठीक है जी. एंड देन एंड कॉम्पिटिशन. ही वाज द एज जो रस्किन था, वो अपने एज का प्रॉफिट था, ठीक है जी, और उसके एज में मटेरियलिज्म था, यूटिलिटेरियनिज्म था एंड कंपटीशन था. एंड ही पॉइंटेड आउट द सॉल्यूशंस टू द ग्रेव प्रॉब्लम व्हिच हिज एज वाज कन्फ्रंटिंग. जो उसके
एरा की जो प्रॉब्लम्स थी उसको हल करने की उसने बहुत कोशिश की एंड ही ट्राई टू गिव अ पॉसिबल सोल्यूशन दैट एज वेल. ठीक है जी. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो. लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज. टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.